अस्सलाम वालेकुम, बाय लो सेल हाई के साथ खुशामदीद। आज हम आपको GTA यानी ग्रेटर टोरंटो के ऐसे सबर्ब में लेके आएंगे जो डेफिनेटली एक सुपर्ब सबर्ब है। यस, मैं बात कर रहा हूँ ओकविल सबर्ब की। न सिर्फ ओकविल बल्कि साउथ ऑफ ओकविल, राइट ऑन लेक शोर। लास्ट एपिसोड को देखा गया, बहुत सराहा गया। उसमें एक होम ओनर ने हमें कांटेक्ट किया और कहा कि आई हैव अ गॉर्जियस हाउस हियर इन ओकविल, तो आप अगर अपने प्रोग्राम में इसे शोकेस करें। वी हैव सीन द हाउस, डेफिनेटली इट्स अ गॉर्जियस हाउस, नो डाउट अबाउट इट। तो आज हम यहाँ हैं और आपको टूर कराएंगे इस घर का। हमारे हाइलाइट्स में सबसे पहले डॉक्टर तारिक से मुलाकात होगी। डॉक्टर तारिक एक आई सर्जन है, एक इन्वेस्टर है जो कि टोरंटो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। रिसेंटली दुबई से आए हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंट विजिटर हैं। उसके बाद फिर आपको लीसा टूर कराएंगी इस ओकविल प्रॉपर्टी का। फिर हम बात करेंगे सलमान आरिफ से, जो आपको मॉर्गेज में टिप बताएंगे। एंड देन विल गो टू लीसा अगेन, जो आपको टिप बताएंगी टू बाय लो एंड सेल हाई। लेट्स गो एंड मीट विद डॉक्टर तारिक। नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले हाइलाइट्स में कि हमारे साथ डॉक्टर तारिक इब्राहिम होंगे। डॉक्टर तारिक मेरे साथ हैं। ये एक इन्वेस्टर हैं, ये दुबई में भी इन्वेस्ट करते हैं, टोरंटो में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और उसके साथ साथ बाय प्रोफेशन ये आई सर्जन है और क्लियर क्लिनिक के चेयरमैन भी हैं। लेट्स टॉक टू डॉक्टर तारिक। हाउ आर यू डॉक्टर तारिक? How are you, Mr. Zia? I would like to thank you for inviting me to your show. Thank you very much for coming. I know you just recently flew back from Dubai and then you back and forth in Dubai, right? Yes. You visit Dubai so often. That's right. You know both market very well. You know Toronto market well as well as you know Dubai market well. Just share with us your recent visit which you had in Dubai. So where the real estate is going in Dubai? Yeah, this is really a good question. Dubai, without doubt, it's put itself as a business hub for the whole world. It is a market for the big companies and so forth. But if you compare it to Toronto market, there is a big difference between Dubai and Toronto market. I have in both, as you have said in your introduction. Toronto market is extremely matured. And then if you look to some of the research, as a doctor, I have to look at some researches. Of course. So if you look at the Grosvenor Group research, it's a very renowned research group here. They put Toronto as the first city in the world and in Canada, even before Vancouver and Calgary, in the real estate investment. And this is because of many reasons, but one of them, which I think your respected audience should take as a home message, it's the resilience, which is the ability to recover if something happens. God forbidden. So this is one of the important things. Toronto is rated #1 city, and this gives an extra safety margin for the investors. So investors feel safe putting their capitals in Toronto because of this. In other words, you are trying to say is investing in Toronto real estate is a peace of mind, and then you have a good overnight sleep, rather than if you invest somewhere else, so you might just wake up in the middle of night, say, oh God, I don't know what would happen to my investment. Is that what you are trying to say? Exactly, these are the words, but in a research study, exactly these words. Besides the resilience, there are many other factors. You need to look at the environmental things. You need to look at the infrastructure, at the adaptive capacity. All these are in favor of Toronto, as if you compare it to other cities in the world. I know you live in Toronto for good, and you love Toronto, right? And your first investment, if I'm not wrong, you did in Toronto in 2008, when you did not even came in Toronto before, right? Yes. So how you got that confidence to invest in a Toronto real estate? There are many tips if you read, but I can just tell your respected audience about my own experience. It is, you need to look at two sides. One of them is you need an experienced
loyal, and above all, honest real estate agent to work with. So this will give you a really peace of mind when it comes to investing in Toronto or in a big cities like this. The second thing is look at the mortgage, and I think you have to tackle this subject in your show, because mortgages here, there are a lot of facilities that the government and the banks are giving, but no one can go into the details except with a mortgage experienced person. Definitely, and I've met a lot of investors even in Dubai myself. They say if they buy a property there for 4 million dirhams, like, which is over $1 million, they have to come up with, cash, and they have to pay off. Versus if you buy something in Toronto, upon your qualification, you may just buy it with 5% deposit, 10 or 15, 20% deposit. You can get a gorgeous investment properties. And other thing is, I know there are a lot of suburbs in Greater Toronto area. You have properties in downtown as well. You invest and then you, have, or you are looking for a property for your own living. And tell us a little bit more about the certain pockets of GTA, which area you like the most? Without doubt and without thinking, it's the downtown Toronto, because if you look, Toronto, there is no more land to build on. If you look up, there is the green belt, which is all around, and then if you go south, there is the Great Lake area. Yeah. So this limits the expansion land for building, and this will definitely affect the price in the coming 10 years. So this you should know. So downtown Toronto for me is the area where I'm secure and I feel safe putting my capital in. Definitely, as you said, you're well set. Water is at the south. You have very limitation. Years ago, we had a parking lots, those gone. Now they are demolishing buildings. Who's paying for that demolition? Definitely the consumer. Right. God knows what would happen down the road when this affordability can go higher and higher. Yeah. Today we are also covering another gorgeous house in Oakville. What do you think about Oakville? Oakville is the place to live. Really? To live in. I do live, you know that Yes. Since I came, I do live in Oakville, and Oakville has a lot of advantages of living. It's the income is high of the people living there, so, and the government is rich in Oakville. So this makes Oakville a smooth place to live in. Then the lakeshore is the privileged area in Oakville as well. You can see here how the view is, and how the greens, and how the smoothness, the cleanliness, the infrastructure. Oakville is the place to live in. I was in a gathering where Oakville mayor was just doing a small debate, and he was quite confident, and he said, I guess Oakville rated one of the best suburbs as well, a municipality among whole Canada. And it's true, and there are definitely reasons why Oakville became such a upscale municipality or suburb for people. They would like to live in this area. But as you said downtown Toronto is for investment, and wherever you live based on which pocket you like the most. I just want to thank you very much for your time. And नाज़रीन, जैसे आपने देखा डॉक्टर तारिक का जो एक्सपोजर है, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिस तरह ज़ाहिर है वो ख़ुद एक सर्जन है, एक आई सर्जन है, चीज़ों को अपने एंगल से अपने मुताबिक देखते हैं, और उन्होंने देखें सबब में जहां आप रहते हैं उनको भी बड़ा अच्छा डिस्कस किया, साथ में उन्होंने दुबई मार्केट को लिंक किया टोरंटो के साथ, अपना कॉन्फिडेंस शो किया डाउनटाउन टोरंटो की मार्केट पे। यहाँ से हम निकलते हैं एक और ब्रेक की तरफ। विल कम बैक टू यू। Be a part of something big. Welcome to the Canary District. 35 acres at your doorstep in Toronto's downtown east. Transit, dining, shopping, spectacular amenities. Introducing Canary Park Condominiums. Don't miss our grand opening special. Own for just $1,000 a month at Canary Park Condos. This is Toronto's next big thing. Tribute Communities creates dream homes. What makes your Tribute special? My Tribute. It's a hip urban address that really says me. My Tribute. A new home where nature and design live in harmony. My Tribute.
A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA, a tradition of excellence for over 30 years. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King & Strachan. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. Be a part of something big. Welcome to the Canary District. 35 acres at your doorstep in Toronto's downtown east. Transit, dining, shopping, spectacular amenities. Introducing Canary Park Condominiums. Don't miss our grand opening special. Own for just $1,000 a month at Canary Park Condos. This is Toronto's next big thing. Welcome back. I'm here in beautiful Oakville, Ontario in a 4,500 square foot home that I'd like to take you on a tour with. We're here in the front hallway and you'll notice that there are 10-foot ceilings here throughout this beautiful home. And you'll also see some contrasting staircase here. This is a design staircase that is a little bit offset for the hardwood that's throughout, which is an exotic hardwood floor. And you will see that throughout the home. We're walking through here to the family room. The family room boasts expansive space of almost 20 feet going up, and you'll see the beautiful detail on the ceiling here. And there is some lovely detail throughout the home with the crown moldings and coffered ceilings. If you'll join me here, we're going to walk into the bright and spacious kitchen with an eat-in component here and a walkout to the backyard. And I'll draw your attention to the granite kitchen countertops and the appliances here. We have a gas range and beautiful custom cabinetry. And a really great feature of the kitchen here is the walk-through. And you'll walk right through your pantry, which has a lot of great storage, into your formal dining room. In the dining room, you can see on the ceiling here, has a beautiful coffered backlit ceiling, which is a very, very nice element and detail for when you're entertaining guests. Now let's go upstairs and take a look at the second floor. So here on the second floor, we're going to see 4 very spacious bedrooms with their own private ensuite for each. I just want to note some of the fine detail here. You can see a niche cut out for some artwork that could be placed here
All the doors throughout are 8 foot, and also you'll notice that the finish on the ceiling is smooth. Another great feature is that the front bedrooms have lake views. Now let's take a closer look at the stunning master bedroom. Come on in. It's very spacious, and you'll see a very special area here which could be used for reading, relaxing, or lounging. Behind you, you'll see, like all of the other bedrooms, very spacious walk-in closets. And also, I'd like to introduce you to the spa ensuite. And welcome to the spa ensuite, your very own sanctuary. थैंक यू लीसा। रियल एस्टेट में जो मॉर्गेज पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि मैं कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट का अगर बैकबोन है तो वो मॉर्गेज है इस कंट्री में। मॉर्गेज के हवाले से हम काफ़ी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सलमान आरिफ है, मॉर्गेज एक्सपर्ट है, मॉर्गेज ब्रोकर है। इनसे हम बातचीत करेंगे मॉर्गेज के हवाले से। सलमान, कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह ज़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। थैंक यू। बहुत से सवालात हैं व्यूवर्स के मॉर्गेज के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस इंटरव्यू के बाद उनको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मॉर्गेज के हवाले से। नया इमिग्रेंट जब माइग्रेट होके लैंड करता है तो क्या वो उसी दिन मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकता है? ज़िया भाई, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आपका और आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को इस क्वेश्चन से और इसके आंसर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में मॉर्गेज का क्राइटेरिया को। आंसर सिंपल वर्ड्स में, आने के 1 महीने के बाद भी घर लिया जा सकता है और आने के 2 साल के बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते घर के लिए, राइट। लोग प्लान करते हैं आने के, फॉर एग्जांपल सुनी सुनाई बात या दोस्त ने या किसी ने उनको कहा कि 2 साल वेट करना पड़ेगा आपको। वो 2 साल के बाद आते हैं किसी प्रोफेशनल के पास, जैसे आपके पास आएंगे कि जी हमें घर लेना है। अब जहाँ तक उनको रियल एस्टेट के बारे में बताना और राइट चॉइस कराना उनके लिए, वो आपका काम है। यू आर द एक्सपर्ट फॉर दिस। मॉर्गेज के लिए आप उस क्लाइंट को रेफ़र करते हैं हमारे पास। हम फिर आपसे कहते हैं कि ज़िया भाई, इनको 1 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, क्योंकि मॉर्गेज के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जिनका एक एज अ लेमैन जनरल बंदे को नहीं पता, जैसे कि मुझे रियल एस्टेट के बारे में उतना नहीं पता जितना आपको पता। सो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए लोगों को कि आने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करें या आप किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए या क्या गाइडलाइंस हैं या हम कब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि जब एक नया इमिग्रेंट आता है तो अगर उसका प्लान है अगले 6 महीने में घर लेने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मॉर्गेज ब्रोकर से पहले मिले ताकि वो उसको उस रूट पे गाइड करें जहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन आ जाए। परफेक्ट, दैट इज़ रियली परफेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि मेरा तो बीकन स्कोर 800 के ऊपर है, मुझे तो टियर 1 बैंक्स को जो है ना आंख बंद करके मॉर्गेज देनी चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या सिर्फ बीकन स्कोर ही एक ऐसा एलिमेंट है मॉर्गेज को क्वालिफाई करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें? और बीकन स्कोर बेसिकली हैज़, टेक्निकली अगर आप बात करें, हैज़ नथिंग टू डू विद मॉर्गेज, क्योंकि लैंडिंग आपको मॉर्गेज भी कर रहा है, लैंडिंग आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी भी कर रही है, लैंडिंग आपको कार लोन कंपनी भी कर रही है। बट मॉर्गेज की जो क्राइटेरिया है वो इज़ बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री। सही। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड आपके पास हो जिसकी लिमिट हो फॉर एग्जांपल $500 एंड यू आर यूजिंग इट फॉर मोर देन 6 months, राइट, योर क्रेडिट स्कोर शुड बी अराउंड 850 और समथिंग। अब 850 देखने में बहुत कमाल क्रेडिट स्कोर है, बट अगर आप मॉर्गेज के बारे में लेंडर से बात करेंगे किसी भी बैंक से, वो कहेंगे इट्स यूजलेस फॉर अस, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो मॉर्गेज की आप समझ लीजिए कि 5% डाउन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। सही, ठीक है। विच आर 2+2+2। तो जो सुनने वाले हैं आपके व्यूअर्स हैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस प्रोग्राम को देखते हैं और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके लिए 2+2+2 को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर 2 credit cards, $2,000 लिमिट फॉर लास्ट 2 years, 5% डाउन।
So 2 plus 2 plus 2 is 6. तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़ जो एक और बड़ा क्वेश्चन है कि जी मेरी तो क्वालिफिकेशन है, मुझे टियर 1 बैंक से बहुत अच्छा लोवेस्ट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बेस्ट टर्म्स मिलने चाहिए, मुझे बी ग्रेड मॉर्गेज क्यों लेना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपके पास क्रेडिट अच्छा है, आपकी इनकम अच्छी है, डाउन पेमेंट भी है, तो आपको टेक्निकली मिलना चाहिए ना। आप जहन में एज अ जनरल पर्सन यही सोचेंगे कि मैं सुपर क्वालिफाइड क्लाइंट हूँ, बट जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक पहला क्वेश्चन आपसे ये करता है कि जी आपकी इनकम अच्छी है, इधर यूर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी सैलरी है, आप आवरली बेस के ऊपर हैं, पिछले साल टैक्स कितना फाइल किया था, इस साल टैक्स कितना फाइल किया था, देन यू आर स्टार्ट शेकिंग। फिर बैंक आपसे पूछता है हाँ जी डाउन पेमेंट आपके पास है, कहाँ है डाउन पेमेंट? आप कहेंगे जी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखी हुई है, मेरे पास कैश की टर्म है। बैंक बोलेगा ये डाउन पेमेंट हम कंसिडर नहीं कर सकते। सही। अब आप क्या करेंगे? ए लेंडर आपने बेसिकली एक चांस दिया और उसने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। नाउ बी लेंडर, आप बी लेंडर के पास जाएंगे और फिर आप मॉर्गेज लेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट वो आइडियल नहीं होगा जो कि आप सोच रहे हैं डे 1 से, जिसके हिसाब से आपने अपना बजट मेकअप किया हुआ है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो प्रोफेशनल के पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे बात करें, टॉक टू देम। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की। देखें मॉर्गेज के हवाले से जो मैं समझता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें अगर एक क्लाइंट या परचेज़र की फ़ाइल ख़राब हो गई तो उसको दोबारा ऑन बोर्ड लेके आना आसान काम है? नो नो नो, इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल, स्पेशली अगर वो 5% डाउन हो जिसमें CMHC और सारे इन्वॉल्व है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट के पास उन्होंने केस उनका किसी तरह से ख़राब हो चुका था और CMHC में, हालांकि उनकी $93,000 इनकम थी, ही वाज पुटिंग 10% डाउन, बट स्टिल CMHC ने डिक्लाइन कर दिया रिसेंटली। ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अनप्रोफेशनल के पास थे, जस्ट बिकॉज ऑफ के हो सकता है वो पार्ट टाइमर के पास थे, जस्ट बिकॉज ऑफ जिनके पास वो गए थे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। अब मैं अगर किसी नए लाइसेंस एजेंट जो कि रियल एस्टेट एजेंट है उनसे बोलूँ कि मुझे डाउनटाउन में कॉन्डो चाहिए, सो मैं कितने % मेरे चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के उस इन्वेस्टमेंट में, मैं उसके पास जाऊँ और एज़ कम्पेयर टू ज़िया अब्बास के पास। इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन इज़ मस्ट वेरी बिफोर यू कम ऑन बोर्ड। आपने नाजरीन देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर होंगे, आपकी फ़ाइल कंप्लीट है, आपको सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स का पता है, तब आप अपनी फ़ाइल अगर मॉर्गेज के लिए भेजेंगे उसके थ्रू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, विल गेट बैक टू। Be a part of something big. Welcome to the Canary District. 35 acres at your doorstep in Toronto's downtown east. Transit, dining, shopping, spectacular amenities. Introducing Canary Park Condominiums. Don't miss our grand opening special. Own for just $1,000 a month at Canary Park Condos. This is Toronto's next big thing. Tribute Communities creates dream homes. What makes your Tribute special? My Tribute. It's a hip urban address that really says me. My Tribute. A new home where nature and design live in harmony. My Tribute. A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King and John. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas.
ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. When on the hunt for your new home, try not to look at too many options. Trust me, it is so easy to get overwhelmed and confused with too much selection. Try making a must-have list with your closest friends and family. Focus on features such as non-negotiables versus perhaps a wish or a want. There is a lot of selection out there, so remember, keep it simple and stay focused. Over to you, Zia. आपने हमारा प्रोग्राम देखा जो हमने शूट किया ओकविल से। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बाय लो एंड सेल हाई में शोकेस हो तो उसके लिए आप हमें ईमेल करें। मुझे दे इजाज़त। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।